students, we are discussing first chapter, that is fundamental unit of life. In this lesson, till date we have studied discovery of cell, structure of cell. In structure of cell we have studied the structure of what? Cell membrane. Okay, and after that we have studied what is inside the cell membrane. We know that cell membranes are of two types. Number one is plasma membrane and number two is cell wall. Cell wall is present only in plant cell, that we have discussed. Okay, after that we have discussed that inside cell membrane the part is called as protoplasm. Protoplasm is divided into two parts. Number one is nucleus and number two is cytoplasm. Nucleus we have studied. What is the function of nucleus? That we have studied in yesterday's period. Now we are going to see what is inside cytoplasm. Okay, cytoplasm, it is it is divided into two parts. Number one is the fluid part of it, that is called as cytosol, and number two is cell organelle. Cell organelle means small parts of cell that are embedded or that float in the cytosol. Okay, we have studied that there are various types of cell organelle like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies and plastids, lysosomes and all, and now we are going to discuss these parts in detail. Okay, so now we are seeing the first part of cell organelle, that is mitochondria. Okay, see what is mitochondria? Mitochondria is a rod-shaped double membraned cell organelle. माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप का होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन? मतलब इसके ऊपर भी दो मेम्ब्रेन्स का कवरिंग है. द आउटर मेम्ब्रेन, डायग्राम में देखो, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड. माइटोकॉन्ड्रिया हैज इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड. जैसे अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना, ब्रेन ऑल्सो हैज ए फोल्डेड स्ट्रक्चर. व्हाई? बिकॉज इफ द स्ट्रक्चर इज फोल्डेड देन इन स्मॉल रीजन यू कैन फिल मोर एरिया. Okay, means if the membrane is folded, it increase the surface area of that particular part. Okay, that is why the inner membrane of mitochondria is folded. So this is the structure of mitochondria. It consists of two membranes, outer membrane and inner membrane. And inner membrane, inside inner membrane there is a fluid like substance present. This fluid is called as matrix. Okay, the fluid inside inner membrane, it is called as matrix. Okay, इसके बाद में नेक्स्ट देखो, ये जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है इनर मेम्ब्रेन के अंदर का, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट. नंबर वन इज डीएनए, नंबर टू राइबोसोम एंड नंबर थ्री इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स. ओके, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, राइबोसोम होता है और डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं. Okay, so mitochondria consist of DNA and ribosome, and ribosome का function क्या है? We know that ribosome can prepare their ribosome help in the production of protein. अभी mitochondria के अंदर अगर ribosome है, it means that it can prepare its own protein, and because of this property mitochondria is called as semi-autonomous organelle. Autonomous मतलब independent. इसको प्रोटीन के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है. इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन प्रोटीन एंड प्रोटीन इज वेरी इसेंशियल इन बिल्डिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ ए सेल. ओके, सो इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन प्रोटीन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनल. ठीक है, अभी इसका वर्किंग देखो कैसे होता है. माइटोकॉन्ड्रिया, द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स दैट कैन कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी. हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोसेस होती है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है रेस्पिरेशन ऑफ द सेल. रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. और इसमें क्या होता है? इसमें फूड जो है आपका, ग्लूकोज जो आप खाते हो या बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, ये डाइजेस्टेड ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हर सेल को पहुंचाया जाता है और वो सेल के अंदर दैट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना. ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग किया जाता है. द ग्लूकोज इज बर्न in presence of oxygen. That process is called as oxidation,
and after oxidation energy is produced. Okay, तो ये प्रोसेस करने के लिए some enzymes are required. That enzymes are present in the matrix of mitochondria. These enzymes convert food into energy and energy is stored in the form of ATP molecules. ये कैसे है, अपने मोबाइल को हम कैसे चार्ज करते हैं, सिमिलर प्रोसेस टेक्स प्लेस हियर. मतलब इसके अंदर आपके मैट्रिक्स के अंदर ADP मॉलिक्यूल्स होते हैं. द मैट्रिक्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ADP मॉलिक्यूल्स. ADP मॉलिक्यूल्स दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या करते हैं, जब भी ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और ये ATP मॉलिक्यूल्स जो है ये आपके जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, ये इनर मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं. और ये मॉलिक्यूल जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ATP मॉलिक्यूल्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है. ATP मॉलिक्यूल्स आर अगेन converted into ADP molecules and some amount of energy is released in the process. Okay, so this is how mitochondria work. ठीक है. What is the function of mitochondria? To produce energy from food, and that is why it is called as powerhouse of the cell. Mitochondria is called as powerhouse of the cell. Okay, so this is what is the meaning of mitochondria. Now we are going to see the function of mitochondria. Function क्या है उसका? Mitochondria is the site for cellular respiration. मैंने जो प्रोसेस आपको बताई, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज का बर्निंग करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है. ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज डन इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन. We can also say that mitochondria produce energy which is required for the working of the cell. Okay, this is about mitochondria. Next we will see in the next video.